PU2 मैथमेटिक्स में मीन वैल्यू थ्योरम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो रिजल्ट्स हैं, फंडामेंटल रिजल्ट्स। सो विदाउट प्रूफ वी आर सॉल्विंग ओनली एग्जांपल्स। सो थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले हम रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स रेंज इसका रियल नंबर होगा। ए बी टू आर मीन्स इसका डोमेन ए बी होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और रेंज रियल नंबर। बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and differentiable on open interval a b such that f of a equal to f of b where a and b are some real numbers, then there exists some c in a b such that f dash c equal to 0। ये रोल्स थ्योरम है। f ए रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि एंड पॉइंट्स पर हम डिफरेंशिएट फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दीज आर द एंड पॉइंट्स। हियर आल्सो यू कैन ऑब्जर्व द ग्राफ। एट एंड पॉइंट्स हम और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन ड्रॉ सो मेनी टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। सी हियर, यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट ये इक्वल होता है एफ ऑफ ए। दिस इज ए बी डोमेन है और इसका रेंज एफ ऑफ ए होगा, इसका रेंज एफ ऑफ बी होगा। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल। Here also in this graph also f of a and f of b are equal. So here रोल्स थ्योरम में f of a equal to f of b होगा। देन इसमें किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ज़ीरो हो सकता है, सी हियर, या किसी फॉर सम सी, और या ये पॉइंट यहाँ दो पॉइंट पर टेंजेंट ज़ीरो हो रहा है, स्लोप ज़ीरो हो रहा है। सो in each graph the slope becomes 0 at least one point. Then precisely we claim the Rolle's theorem, the slope of the tangent at any point of the graph is nothing but derivative. Slope of the point को ही हम derivative of the function कहते हैं। Now come to the mean value theorem. Mean value theorem is extension of Rolle's theorem. Mean value theorem, Rolle's theorem में f of a equal to f of b होगा, बट यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होगा मीन वैल्यू थ्योरम में। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सम सी इन ए बी। सी, सपोज दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ में ए और बी इक्वल नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। सपोज सम ए हियर, सम बी हियर, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये सेकेंड ड्रॉ करो ग्राफ के ऊपर, तो इसके पैरेलल क्या होगा? एक टेंजेंट, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द सेकेंड। सो ये एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, बी माइनस ए, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव टेकन दिस वन, एफ ऑफ बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बाय डिस्टेंस फार्मूला दिस वन। सो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम? लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन on closed interval a b and differentiable on open interval a b, then there exists some c in a b such that f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Now I am writing Rolle's theorem here. Once again, let f be a real valued function. Let f be a real valued function defined on a b। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? f must be continuous, f is continuous on closed interval a b। सेकेंड कंडीशन
f must be, f is differentiable in open interval a b, because at end points we cannot differentiate the function. And third condition, f of a is equal to f of b, then we can apply Rolle's theorem for this function. Then there exists at least or some c belongs to open interval a b such that f dash c इक्वल टू 0. आई थिंक आपको याद हो गया होगा रोल्स थ्योरम क्या है. सो इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी, एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी रहना चाहिए, एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी or some c belongs to AB such that f dash c equal to 0. Now come to the mean value theorem. मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? ये भी इसी टाइप है, लास्ट में थोड़ा डिफरेंस है. फर्स्ट, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन closed interval a b. First, f is continuous on a b. First condition, f is now मीन वैल्यू थ्योरम. अब देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है. लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. Let f be a real valued function defined on closed interval a b. फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? f is continuous on closed interval a b. I have told you every continuous function differentiable. Second condition, f must be differentiable on AB. Then there exists at least c belongs to AB, open interval AB, such that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. This is our mean value theorem. Rolle's theorem में क्या था? f must be continuous on closed interval a b, f must be differentiable on open interval a b. Then there exist at least f of a equal to f of b था. यहाँ पर f of a और f of b equal नहीं होगा in textbook. You can see the graph. This is the graph. Here f of a is not equal to f of b. This is f of a, f of b. This point is a, that means this is f of a. This point is b, that means it is f of b. So we have taken 1 second here from a to b, and this is the tangent to the curve. This curve tangent क्या है यहाँ पर? c tangent है. So f dash c is equal to slope of these two lines are parallel. In straight line chapter we have read, if two lines are parallel, slopes must be equal. Slope of this line is equal to slope of this line. So slope means differentiation, f dash of c, differentiation of this point. So differentiation of this equal to slope formula. By distance formula we have taken y2 minus y1, slope y equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. If 2 points are given, the slope formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is a is x1, y1, f of a is y1,
x2b is x2, f of b is y2. So slope of this one is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 means f of b minus f of a divided by b minus a equal to slope of this point is f dash c. Therefore it is given f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So we shall solve. Some remarks are there. So first remark, remark 1, polynomial function is always continuous function. Polynomial function is continuous function. Polynomial function कैसा होता है? Degree must be natural number. For example 2x square plus 3x plus 1. Here degree is natural number. So this type of functions are called polynomial functions. So polynomial function, sine function, cos function, cosine function, exponential function, that is e raised to x, logarithmic function, they are always continuous. Always continuous. We know that every continuous function is differentiable, but every differentiable function may or may not be continuous. So our second remark is every differentiable function is continuous, or every continuous function is differentiable, but converse may or may not be true. Mod x is, see here the remarks, mod x is not differentiable at x equal to 0, tan x equal to 0 is not differentiable at x equal to plus or minus pi by 2, plus or minus 3 pi by 2. So these are the remarks. Now we shall solve example 42 from textbook. This example, verify Rolle's theorem for the function y equal to x square plus 2 at a equal to minus 2 and b equal to 2. So this example we are going to solve. Verify Rolle's theorem, we are verifying here. Rolle's theorem for the function y equal to x square plus 2 where a equal to minus 2 and b equal to 2. Here interval minus 2 plus 2 is given. So how we have to solve this example? First check whether the given function is continuous or not. Solution. The given function is polynomial function. The function is here x raised to 2, power is natural number. So the given function is polynomial function. Every polynomial function is continuous, we know it. Hence it is first one continuous at given interval minus 2 plus 2. Second condition, every continuous function is differentiable. So it is differentiable in open interval minus 2 plus 2. हमेशा ओपन इंटरवल ही लेना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी at we cannot differentiate at endpoints. And now third condition, we have to check whether f of a is equal to f of b. Then there exists a point c in AB such that f dash c equal to 0. So f of a is our f of x is x square plus 2. F of a means it is a and it is b. F of minus 2, f of minus 2 means minus 2 square plus 2, that is minus 2 square 4, 4 plus 2 it is 6. Check f of b means f of plus 2, again put a 2 here,
2 square plus 2, that is 4 plus 2 is 6. Here f of a is equal to f of b. Then there exists a point f of a equal to f of b. Then there exists a point c in AB. C belongs to minus 2 comma plus 2 open interval, such that f dash is c equal to 0. Here our f of x is x square plus 2 and f dash of x is 2x and f dash of c is 2c. That means 2c equal to 0. This implies c equal to 0 belongs to, check whether it is belonging to the interval or not. So it is belonging to minus 2 comma plus 2 is 0. ये दोनों के बीच में ही आएगा. So it is mean value theorem is verified. First we have to check the function is continuous, differentiable, f of a equal to f of b. Then there exists a point c in AB such that f dash c equal to 0. Next question, example 43. We are going to solve. Verify mean value theorem for the function f of x is equal to x square in the interval 2 comma 4. The function f of x equal to x square is continuous in 2 comma 4 and differentiable in 2 comma 4. As it is derivative, f dash of x equal to 2x is defined in 2 comma 4. इसे हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे. Solution. First, the function f of x square is, it is polynomial function. The function क्या होना, the function, the given function is continuous in closed interval AB. The function f of x is equal to x square, as it is a polynomial function, is continuous in 2 comma 4. As the function is continuous, the given function is also differentiable. Then f is differentiable, also differentiable in open interval 2 comma 4. This is mean value theorem. So f of a, f of b यहाँ पर चेक करना नहीं है. f of a will not be equal to f of b. Just take function f of x as 2x. Then f of a क्या होगा यहाँ पर, a means f of 2. f of 2, here f dash of x is 2x. Given function is f of x equal to x square. Here f of 2 is 2 square, that is 4, and f of 4 is 4 square, that is 16, and differentiation of x square is 2x. So f of c, check here, f dash of c, f dash of c means 2c. Put x के प्लेस पर c डालो. So f dash of c equal to 2c. यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c in AB such that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So हमारा f of b है f of 4, 16 minus 4 divided by b minus a, that is 4 minus 2, that is 6. But f dash c equal to 2c. So 2c equal to 6. 2c equal to 6, c equal to 6 by 2, that is 3. So check whether 3 belongs to this interval or not. So 3 belongs to 2 comma 4. 3, 2 और 4 के बीच में ही आएगा. Hence mean value theorem verified. Hence mean value theorem
वेरीफाइड।